नहीं 21 दो वाला जैसे आज था तो उससे कल बात किया था तो उसने मना कर दिया तो बोला था कि वो मेरे से मिलके नहीं गई। वो मेरे पास ही नहीं है, मेरे पास 2 दिन बाद आते हैं घर पे। अरे बेटा वो तेरे चाचा है ना, वो माने ही नहीं, कह रहा कि आप पी ले बेटा, भतीजा मिलता रहेगा तेरे को। हाँ चला भाई ठीक है। हैंग कर रहे हैं, मैं तो लैपटॉप इतना हैंग करता है सुनील सर। करो इसको ना आगे। ये करो मैंने प्रोजेक्टर ऐड किया है तो बस हो जाता है। हाँ वैसे ही होता है। मैंने टीवी में मॉनिटर यूज किया है।
अभी बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर। रिपोर्ट आ गई तो आपको ध्यान की उम्र कहानी पड़ेगा। बंद क्यों मैं करना वीडियो ऊपर क्लिक करो म्यूट आ रहे ना वो वीडियो तो नहीं। हाँ वीडियो का दोस्तों करके दिखो जरा इसका नहीं देना पड़ता है उसका वॉल्यूम तो नहीं ना ये ना नहीं आ रहे हैं सबके राइट म्यूट म्यूट देना आ रहा है म्यूट माय ऑडियो जल्दी नहीं है जल्दी नहीं है 2 घंटा हो गया नहीं बस 1 घंटे में देख लेंगे फिर देख लेंगे 1 घंटा
इतना भी ऑन कर लो कि कैमरा ही नहीं है। तो आशीष जैन का फोन है। इसका नाम क्या है? क्या ऑन है? नहीं मारा बस। म्यूट कर दी। उसकी मेल पे रिप्लाई होगा वो तभी भेजी है। क्या बोल दिया? खाली हेमंत मार्क करते हेमंत को रिप्लाई ऑल करके हेमंत को रखना है। इसलिए लोगों मेरे को ही भेजा हुआ है, मैं लिख दूं अब भगवान की कृपा से अब जरूर भेज दूं। बोलो। लिख रहा हूँ उसको भगवान की जरूरत दया से। किधर चला गया हूँ? ये किधर चला गया? थल्ले जा किते? इतना तो आगे दिखा रहा है। ये वो कॉर्नर से चलिए अंदर। चल ले तेरे मेरे नाम पे चल रहा नाम तो मेरा छपया है सबना भी बुला
Am I audible? मेरी आवाज आ रही है जी? सभी मित्रों को मेरी आवाज आ रही है? Are you able to hear me? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार जरा और बाकी लॉजिस्टिक्स भी चेक कर लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम। ठीक है, हाँ ये बंद कर दो। एंड सारे जो है ना So friends, I am unmuting all of us so that we can greet each other, and then we will start this journey of GST Manthan. I am allowing all the participants to unmute themselves and greet each other. So first of all, Jai Shri Krishna. Please accept my warm regards. Jai Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, sir. जय श्री कृष्ण राजेंद्र भाई। 186. Surjit sir, you have started looking more handsome. जय श्री कृष्ण सर। गुड आफ्टरनून सर। Jai Krishna, sir. Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Krishna sir. Sir, with all the gray, you have started looking more handsome. I can see Kailash bhai, Kanna ji, our Sharma ji, Arpit, Yogesh, Sunil bhai, Bhattacharya ji from Patna. Sir, namaskar. Ganesh ji, namaskar everybody. So, in fact, this has become a kind of kumbh wherein all the devotees always visit, actually go back into the pilgrimage of Ganga. So that's how I'm muting everyone, friends, as the ritual of this program. Right. So friends, I first of all welcome you all in this GST course, in this journey, in this flight of GST, in this manthan of GST. So today's beginning, today's course is different from the previous one. Of course, I have to say this, then only people will join me. So friends, first of all, Rahul bhai is smiling at me. Thank you, Rahul bhai, for joining. This is the third time in the row that he is sitting right in front of me and listening to me all through. I can see now. I would request all of you to please keep your cameras on, because then only we will have a great time discussing GST, understanding the various aspects of the subject. And of course, it is time to have a bond. It is time to have a relationship to cherish for rest of lives. So first of all, on behalf of GST Research Foundation, I welcome you all. It is my proud privilege to present you this very first course. Of course, I am doing it for the 5th time in the row, but on behalf of GST Research Foundation, this is the very first course, very first journey of the entire subject from beginning till advanced level. I'm extremely excited to see rather I would say much of my old friends, old faces. Frankly, friends, when people
do come back and can afford to listen to you all over again. So it is something, I believe it is more of a real win for anybody. So I really thank all of you from core of my heart to join this course and have trust over me. I would try my best. I have been trying my best for past 1 month since the launch of the course to prepare for this course. And for next 1 more month, I would be with you. Rest everything I have stopped. I have stopped taking any further cases anymore. So now I'll be dedicating to this course only because this is itself for myself also a manthan wherein I would also like to bring out some jewels. May Ma Saraswati come out of it this manthan and reach to all of us. So friends, when I was listening to reading to various messages from all corners, और मुझे दिख रहा था कि people are very very excited to listen to this course, to join this course. Friends, it increases my responsibility all the more. मेरी जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है जब लोग मुझे नजर आते हैं कि वो उत्साहित हैं बड़े ही इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए. सो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. फ्रेंड्स, कुछ 10-15 मिनट ऑफ कोर्स हम बिगिनिंग में कुछ बेसिक्स के ऊपर, कुछ बैकग्राउंड के ऊपर, कुछ रूल्स के ऊपर, नियमों के ऊपर लगाएंगे. पहली बात तो जहां जहां बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ आईसीआई हमें हेल्प करता था, हमने उनकी पूरी हेल्प ली है, तो मैं उनको पूरा धन्यवाद और पूरा श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें गाइड किया और मैं उन सारी बातों को आपके सामने ला पाया. टेक्समैन ने बहुत हमारी मदद की है क्योंकि इस पीपीटी और आने वाली 11 और पीपीटीज में लगभग जो 2500 स्लाइड्स की हम बात करते हैं उसमें मैं लगभग आपको 100 लगभग नहीं पूरे 190 सर्कुलर्स की बात करूंगा और लगभग 500 से ज्यादा हाईकोर्ट के जजमेंट्स की बात करूंगा और लगभग 1000 से ज्यादा नोटिफिकेशंस कहीं ना कहीं प्लेस करूंगा इस पीपीटी में. उन सब के इस पीपीटी में लिंक्स आपको टेक्समैन के सौजन्य से प्राप्त हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. फिर उसके बाद हम जो है और भी सीए फाइनल के जो हमारे मित्र हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा रहे हैं. अब आप सोचिए जरा इस फ्लाइट का ऑल्टीट्यूड क्या होने वाला है. अभी फिलहाल मैं आपको एज पायलट ऑफ दिस फ्लाइट बेसिक्स बता रहा हूं कि हम किस तरह से कहां पर जाने वाले हैं. तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए और देखते रहिए स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर अपनी, और कोई भी मिनट मिस मत कीजिए. तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरी फ्लाइट में आप एक ऐसी लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ेंगे 8वीं 9वीं क्लास में जहां पर आपने सोचा नहीं होगा. आज की क्लास का बड़ा महत्व है, तो आप याद रखिएगा जो बातें आज मैं बोलूंगा वो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में जाकर आपको कहीं ना कहीं और कहीं सिद्ध होती हुई नजर आएंगी. फिर उसके बाद अभी तो जो पहली दूसरी तीसरी क्लास होगी वो रनवे पे रन करने वाली क्लास होगी, अभी तो हमारी रनिंग चालू होगी. फिर हम फ्लाइट लेंगे चौथी 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में. फिर हम गेन करेंगे ऑल्टीट्यूड 8वीं 9वीं क्लास में और लास्ट में जाकर हम स्पीड बढ़ाएंगे और पूरे मतलब इस जो गुरुत्वाकर्षण बल से हमारी जो इस धरती का है उससे ऊपर निकल जाएंगे. तो फिर आप महसूस कर सकते हैं वहां पर हवा का कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, क्योंकि दबाव तो तब होता है जब हम उस चीज को जाने ना, जब हम उससे परे निकल जाएं तो फिर कोई दबाव नहीं होता. तो इस पीपीटी में और आने वाली सभी पीपीटीज में लिंक्स लगे हैं, सर्कुलर्स के, नोटिफिकेशंस के, जजमेंट्स जहां जहां प्लेसमेंट दी गई है वो बताई गई है. ये सब बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली. इनफैक्ट यहाँ पर हमारे जो सीए फाइनल के और बहुत सारे मित्र हैं भारत में जो जीएसटी पढ़ा रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है सीए फाइनल का उसका भी भरपूर प्रयोग किया गया है. तो आप ये मानकर चलिएगा कि एज ए स्टूडेंट हम इसको पूरी लर्निंग को लेने वाले हैं और धीरे धीरे करके प्रोफेशनल अप्रोच में जाएंगे. और जो भी क्वेरीज आज तक लोग मुझसे पूछते आए हैं भिन्न भिन्न बातों पर, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, I would be touching upon all those queries also at the relevant places. So I hope now you are with me, and please do maximum use of your chat box.
and keep writing, not the queries. Queries जो हैं वो हम end of the session में लेंगे. आप note कीजिए, बीच में अपनी query नहीं भेजेगा कोई. जो query भेजेगा मैं नहीं पढ़ूंगा उसको. Consider that I have not seen it. I would not be leaving the class. Those who have joined me for the second or third time must be knowing that I would be leaving the class till even a single querist would remain in the batch. So do not worry about it. I'll be answering each and every query of yours. And of course, this is a journey now for next 30-40 days, and we will be together for next these many days. And whatever query you have in the subject, whatever is possible on this earth about GST, we will try and do that for you. So friends, starting sharing my screen now. Okay. अब आ रही है आवाज? आप अब आ रही है? अब वंडरफुल. Now let me share my screen. Then see आपको आवाज आती है कि नहीं. अब आ रही है मेरी आवाज? Write in the chat box, please. Wonderful, wonderful. Thank you very much, friends. Now I'll be starting with this Shant mantra for you. सहना सहनावतु सहनो भुनक्तु वीर्यं मरुवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्यावहै. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Am I still audible, friends? Wonderful. Thank you. So, this mantra we have requested to invoke the blessings of Ma Saraswati. May we all be protected. May we all enjoy the process of learning. May we all strive together. May we all become enlightened. May our relationship never be vitiated. Om Shanti, Shanti, Shanti. So we have started with the praising the blessings of Ma Saraswati, Shanti mantra. Now, so those who are attending or those who already know the subject, majority of us must be knowing it. So I would request all of you for at least next 2 hours, 30 minutes, unlearn everything, whatever you know. Whatever you know, forget it. Let me start with the basics, very basics. The first is prerequisites for achieving the objectives of the course: 100% attendance. 15 minutes of every class is most crucial. We will be talking about the previous class. Now in this program, now in this entire journey, in this manthan, we will try to correlate all the provisions together on continuous basis. So we will not be reading the provisions in standalone basis, in isolation, but rather we will try to correlate. We will try to understand what has happened in the first class. Now, what is the impact of the same on the second class? I have covered in the first class about the basic of the GST, about the supply, about the levy, about the composite supply, about various types of different types of supply, why we need to do study supply, what is the chargeability, how is it different from supply, and what is the difference between the present structure of GST and the previous structure of laws which were there earlier before 1st July 2017. So this is, we will try to correlate each and every aspect with every class. Like in second class, I'm not talking about time of supply valuation or input tax credit. I'm talking about the registration part. And registration part, which I feel, if you have read the captions of every topic which I have created while circulating the course with you, was everything starts with registration and ends with registration. So in this subject also, if you have to comply with this subject, you have to go for registration. And if you do not have to comply this subject anymore, you have to go for surrender of cancellation of registration or leaving the registration. So everything starts with the registration. That is why we will, from day after tomorrow and day after tomorrow, we will be talking about the registration. But we will be linking the taxable event, the supply, the levy with the registration, and the registration with the input tax credit, and the registration with the time of supply, and the registration with the refund part also, and the registration which type of tax is to be paid. All these are linked, and unless we do not do that, the purpose of this entire exercise would be defeated. So apply common sense and logic to understand the law. Although whenever the lawmakers make and interpret the law, not the judiciary, whenever the lawmakers make or interpret the law, sometimes the process is devoid of the common sense and logic. But whenever the interpretation is done of any law, common sense and logic, that only prevails. So you also do not leave that. Of course, that is not available in the market, but you can borrow it from somebody else. Revision of every class on the day off. So I would suggest, whenever now, so today whatever we would be discussing, you have to study it tomorrow. You have to study it tomorrow, and then you have to come back. I would request everyone to please keep your cameras on. Do not switch it off. So, okay.
Now, friends, fundamentals of GST. These are the aspects of our GST which we have to understand. Now, we have to understand from the end. From this, you may say it is start, or you may call it is end. Event. First is in subject is taxable event. अब आ रहा है? What is wrong with this mic? I believe it is very difficult. My logistics do not work. I have been using this for every webinar I'm making twice or thrice a week. Anyways, so for every fiscal statute is the one who is there to collect taxes from the citizens of the country. Every fiscal statute has to have a taxable event. And in this law, in this GST also, we have a taxable event. Now, what is that? We will discuss. वैसे मैं आपको बता दूं, the taxable event here we are going to discuss is supply. So one word we have to remember in mind, that is supply. अब आवाज ठीक है? मैं तो भाई साहब अपनी जो है टॉप ऑफ द वॉइस बोलता हूं. ये मुझे आवाज ठीक है? अब आवाज बेहतर है? माइक में इश्यू है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. हम छोड़ देते हैं माइक को. माइक मैं इसीलिए यूज करता हूं कि आवाज बेहतर हो. अगर आवाज जब नहीं है बेहतर तो फिर हमें माइक की जरूरत नहीं है. राइट, वंडरफुल. I'll replace it, or we'll do some more research on it, but what is the problem? Anyways, so now, so here in this law, the taxable event is supply. We will understand what is the role of the taxable event, but please understand that these 6 pillars are there. Of course, there are basically 4 pillars in the subject which are more important. I just show you this. Just a second. Okay. Wait a second. Yes, sir. This is on the basis of the Honorable Supreme Court, Govind Saran Ganga Saran versus Commissioner of Sales Tax. In this judgment, the Honorable Apex Court decided that in every fiscal statute, especially the indirect tax statute, these are the 4 pillars on which the law is standing. First is here supply. Second, who is liable to pay. Third is rate, and fourth is value. And we have further subdivided these 4 pillars into this. Just read it again now. Taxable event, the levy has to be there. Who is the taxable person? Who is liable to pay? At what value? At what rate? And how to pay tax? Let me tell you, friends, if any of this event, if any of this pillar is missing from the law, then the law fails. So we have to base our entire discussion on all these of 6 pillars. First of all, the supply. What is supply? If there is a supply, then you have to check whether it is livable to tax. क्या उस पर टैक्स लगता है? देखिए मैं आपको बता दूं मित्रों, बहुत बार मेरे पास सवाल आते हैं कि जी क्या फलानी सप्लाई या फलानी एक्टिविटी टैक्सेबल है, क्या ये ढिमकानी एक्टिविटी सप्लाई है, कैसे होगी सप्लाई. अब आपको अब इस क्लास में बहुत सिंसियरली, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है, कोई भी एक्टिविटी सप्लाई कब होगी और कब नहीं होगी, और अगर वो सप्लाई होगी तो कब वो टैक्सेबल होगी.
देखिए, levy is a separate event. The first event which happens in the journey of the subject is taxable event, that is supply, whether it is a supply, whether the activity is a supply or not. And then we have to identify who is the taxable person, who is liable to pay the tax. As per Govind Saran, Ganga Saran, Honorable Apex Court also said that we have to identify. You find that activity is a supply, it is taxable also, but यही नहीं पता कानून में लिखा कि टैक्स पे किसने करना है. ये लिखा है पे किसने करना है, तो किस तरह पे करना है. हाउ टू पे टैक्स ऑल्सो इज इक्वली इंपॉर्टेंट. देन किस वैल्यू पे करना है. देखिए, वैल्यू हम बहुत लाइटली लेते हैं वैल्यूएशन को. Valuation is one of the most important event in the subject. At customs में अगर जो लोग कस्टम में काम करते थे, कर रहे हैं और उनका एक्सपोजर है, तो इस बात पर अप्रिशिएट करेंगे कि कस्टम्स में केवल 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज है. वैल्यू किस पर लगनी है, किस वैल्यू पर टैक्स लगना है, और रेट ऑफ टैक्स. रेट ऑफ टैक्स को दूसरा नाम दिया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और गुड्स. क्लासिफिकेशन से डिटरमाइन होता है कि रेट कैसे निकलेगा. सिमिलरली इन आवर जीएसटी ऑल्सो वैल्यूएशन डिटरमाइन करता है कि किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा. काइंडली डू नॉट रिकॉर्ड दिस मीटिंग. पीपल आर सेंडिंग मी द रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग. नोबडी कैन रिकॉर्ड दिस. आई एम सॉरी फ्रेंड्स. Do not touch with the panel. Wherever you are listening, do not touch the panel. That breaks my tempo. Okay. So these are the 6 things, 6 events, 6 fundamentals on which the law is standing. Okay. Moving ahead. Now, structure of GST. Jurisdiction, independence. Every state has its own stake. ये फेडरल सिस्टम है. यहाँ पर फेडरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है कि एक सेंटर होता है जो कि ओवरऑल मैनेज करता है, और बाकी पूरे के पूरे प्रांत को, पूरे के पूरे जो प्रोविंसेस को हम स्टेट्स में डिवाइड करते हैं और स्टेट्स को इंडिपेंडेंट पावर्स देते हैं. उनका अपना जुरिस्डिक्शनल इंडिपेंडेंस होता है. जुरिस्डिक्शनल इंडिपेंडेंस मतलब वो असेसमेंट कर सकते हैं, वो चेकिंग कर सकते हैं, वो रेड कर सकते हैं, वो असेसी को जो भी वहां धंधा कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं. वो सब उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स हैं. ये फेडरल सिस्टम है. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है. ये कानून जो है बेसिकली मित्रों आपको समझना पड़ेगा दैट दिस लॉ इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड. wherever goods or services would be finally destined. For example, I am sitting in Delhi and I can see our Dhyani bhai Sunil ji is sitting in Dehradun, and he asked me to send some goods to him at Dehradun, and he is a retailer of those goods in Dehradun. Now he sells those goods in Dehradun to the tourist people who are visiting Dehradun, and the tourists consume those goods in Dehradun. So finally the goods are being consumed in the state of Uttarakhand. So finally the consumption is taken place in the state of Uttarakhand, and finally the tax with respect to those goods would belong to the state of Uttarakhand. Although the goods have been originated from, it has been manufactured here in Delhi also, and then been sent from Delhi to Uttarakhand, but it is because a destination based consumption tax. So consumption where takes place, the tax belongs to that destination. That is why we always know that the states which are having high consumption are having higher collection of the GST also. Like the destination based, like in case of tourist states, like in case of large states, UP manufactures, Punjab manufactures and consumes, like Karnataka manufactures and consumes, like Goa is also a consumption based state. Majority whatever goods are being consumed in Goa, because that is a tourist place. So majority consumption happens in the state itself, whatever goods reach to Goa. So that way it is a I hope you must have understood the idea behind it. Then dual levy, which I have already explained, that there are two people who are taxing single transaction. For example, if I am sitting in Delhi, I am sending goods to Rahul bhai, who is sitting in Delhi only, and then in that situation,
the transaction belongs to Delhi state only. So in this transaction, Delhi would be levying tax, as well as the center having its share on this transaction would be levying tax. Anyways, so then if I would be sending these goods to Dehradun, then in that situation, I would be taxing these goods, which again would be shared between the state and the center according to the final destination of the goods. Stay with me. Sometimes it could be possible that some of the aspects you do not understand completely, but do not worry. Stay with me. If you would stay with me, if you आप टिके रहेंगे तो आप जमे रहेंगे तो आपके पास कई बारी बाउंसर्स आएंगे, कुछ बॉल्स बाउंसर्स भी आएंगी, लेकिन अगर आप जमे रहेंगे, आप डक मार जाएंगे, आउट नहीं होंगे, इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे, तो आपके पास ऐसी बॉल्स भी आएंगी बहुत ही अच्छी वाली जो आपको एक्चुअली ग्राउंड के बाहर मारने के लिए भी अवेलेबल होंगी. So do not worry about that. Every activity shall be considered to be taxable supply unless it is not exempted. This is a very, very significant line. Although I always try कि मैं धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना, अभी रनिंग चल रहा है, अभी हम रनवे पर दौड़ रहे हैं अभी, और बहुत कम स्पीड में दौड़ रहे हैं इस प्लेन की, लेकिन कुछ चीजें कहीं कुछ बम भी होने चाहिए. तो आप ध्यान से सुनिए एक बात को, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात, और ये बात मैं पूरे कोर्स में 10-20 बार बोलूंगा आपको, कि कोई भी एक्टिविटी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल भी होगी बशर्ते वो एग्जेम्प्टेड ना हो. देखिए राहुल भाई, ब्रेड पकौड़े नहीं चल पाएंगे, सॉरी राहुल भाई, राहुल शर्मा जी, ब्रेड पकौड़े नहीं चल पाएंगे. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ भी भेज दीजिए. जब मेरा कोर्स खत्म होगा भी 6 बजे 6:30 बजे, तो मैं भी लूंगा. अब बोलिएगा जरा, भिजवाइएगा अपनी लड़की से. So every activity which is supply would be taxable unless exempted. Listen to me carefully. Every activity which is supply is a taxable event, would be taxable unless exempted. और exempted कहाँ होगी, थोड़ी देर बाद पता लगेगा, आज ही पता लगेगा, सब कुछ आज पता लगेगा, बेसिक पूरा आज पता लगेगा. अब गवर्निंग एक्ट्स कौन से हैं हमारे सब्जेक्ट में, जो पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने फॉर्मली पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया है, देखिए मैं आपको बताऊं, हर वो व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, जरूरी नहीं है, लेकिन स्कूल की एजुकेशन जो है उसे हम एक फॉर्मलाइज एजुकेशन कहा जाता है. और आपकी आज जीएसटी की 9वीं 10वीं में यहाँ करवा दूंगा इस कोर्स में. अब अगर हायर एजुकेशन लेनी है तो आपको खुद से और मेहनत करनी पड़ेगी. 9वीं 10वीं में यहाँ तक करा दूंगा और आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस आया तो फॉर्म कैसे करना है, हिंदी की वर्णमाला में क ख ग और शब्द कैसे बनते हैं, उच्चारण कैसे होता है, ये सब बातें मैं आपको सिखा दूंगा. लेकिन जो मेरे साथ और बने रहेंगे, आप अपना रुचि दिखाएंगे, तो वहां पर हम हायर एजुकेशन में भी जाने वाले हैं. और बहुत सारे मित्र मेरे यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहे हैं, रिपीटर्स मेरे जो हैं मित्र, वो सारे हायर एजुकेशन के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं आराम से. ठीक है जी. अब हमारे पास 3 तरह के एक्ट है. पहला CGST एक्ट, दूसरा IGST एक्ट, और तीसरा स्टेट या यूटी जीएसटी एक्ट. मित्रों, जितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं अब हमारे पास, और 7 यूटीज हैं हमारे पास. तो जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट के एक्ट हैं और 7 यूटीज के एक्ट. ठीक है जी. CGST एक्ट हमेशा लगता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. इंट्रा मतलब मेरा राहुल को माल बेचा दिल्ली से दिल्ली, तो मित्रों ये है इंट्रा. और जब मैंने सुनील दयानी को माल बेचा, तो मित्रों दिल्ली टू यूके. देखिए दयानी साहब कितना बढ़िया है, इनके नाम क्या है, यूके वाले है सुनील जी, यूके वाले. आवाज कम आ रही है अब, ठीक है आवाज, ठीक है. तो ये जब दयानी साहब को माल जाएगा तो भाई साहब ये माना जाएगा इंटर स्टेट. हमारे मोहित जी भी बैठे हैं नए ऑफिस में अपने चमकते हुए संगरूर में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. उसके बाद IGST एक्ट जो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पर लगेगा. अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे, आप बिल्कुल मित्रों परवाह ना करें. स्टेट और यूटी GST एक्ट सबके अलग अलग स्टेट के अपने आप होंगे.
आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, सीजीएसटी एक्ट है मदर एक्ट। मदर एक्ट, मदर एक्ट वो होता है जिनसे सब पैदा होते हैं। पता है आपको, बैकुंठ जब जाएंगे आप मोहित जी, तो आप और मैं, बैकुंठ जाने वाली हरकतें कर रहे हैं वैसे हम, बैकुंठ जब जाएंगे हम, तो हम अपने पिता के नाम से नहीं जाने जाएंगे, हम अपनी माता के नाम से जाने जाएंगे कि मोहित शर्मा पुत्र, आपकी माता का नाम, पिता का नहीं। इसी तरह सीजी एसजीएसटी एक्ट जो है वो पुत्र एक्ट है, और ये जाने जाते हैं किसके नाम से, अपनी मदर के नाम से, और वो मदर एक्ट है सीजीएसटी एक्ट। इसलिए ये कहा जाता है कि सीजीएसटी एक्ट के सभी प्रोविजंस एसजीएसटी एक्ट में ऑलमोस्ट 99% वर्बिटम होते हैं। और आईजीएसटी एक्ट जो है वो पिता एक्ट, फादरली एक्ट। फादर का क्या काम होता है, जो मदर ने कह दिया वो मान, ठीक है ना। फादर का तो यही काम होता है, सुरजीत सर हंस रहे हैं कि बेटा तुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया। फादर का ये काम होता है कि जो मदर ने कह दिया वो मानना है, और जो मदर ने अपने एक्ट में लिख दिया उसको भी एज इट इज अडॉप्ट कर लेना है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं दूसरा माइक ट्राई कर रहा हूं। अब बताइए आवाज कैसी है, अब कैसी आवाज आ रही है सर? तो परफेक्ट, अच्छा गुड, अच्छा बढ़िया, लाउड एंड क्लियर, अच्छा बहुत बढ़िया, धन्यवाद मकरंद नागर जी, जय महाकाल। आपको पता है मोहित जी, नागर साहब जो हैं हमारे काशी से हैं, बनारस से। चलिए, कह रहे हैं रिपीट द लास्ट पॉइंट। सर चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ लास्ट पॉइंट, ओके कर देता हूँ जी। देखिए आईजीएसटी एक्ट में जितने भी प्रोविजंस उसके हैं वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए केवल 26 सेक्शन लिखे हैं। आईजीएसटी एक्ट सारे के सारे प्रोविजंस जो सीजीएसटी एक्ट में लिखे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के हों, वैल्यूएशन के हों, आईटीसी के हों, शो कॉज के हों, असेसमेंट के हों, किसी भी तरह के और प्रोविजंस हैं, वो सारे आईजीएसटी बोरो कर लेता है एज इट इज सीजीएसटी। यहाँ पर 187 सेक्शंस हैं, 198 रूल्स हैं, 200 फॉर्म्स हैं, और वहां 26 सेक्शंस हैं, 9 रूल्स हैं, और बाकी रूल 2 सारा का सारा जो है रूल्स का सीजीएसटी रूल को अडॉप्ट कर लेता है। अब आवाज ठीक है सर? अभी भी आवाज ब्रेक है? अब क्या आवाज को, अब देखिए आवाज परिवर्तन किया और इंटरनेट को भी बेटर कर, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक स्ट्रक्चर। आप आगे बढ़ते हैं जरा, और एक और बात इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब आ रही है आवाज?
I apologize for the inconvenience, friends. जी चलिए, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स पेबल जो है वो किस तरह से डिटरमाइन होगा। हमारे यहाँ टैक्स पेबल किस तरह से डिटरमाइन होगा। पेबल डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स निकालें। देखिए, मैसेज सिर्फ अब मत कीजिए, अगर कोई और इशू हो तो आप बताइए, मैसेज ना करें, मैं बार बार मैसेज नहीं देखना चाहता। आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिलीवरी। सो आउटपुट, अब देखिए टैक्स पेबल कैसे डिटरमाइन होगा। आपने जो टैक्स पे करना है इस कानून में, उसको निकालने के लिए आपको पहले आउटपुट टैक्स निकालना है। आउटपुट टैक्स से आप माइनस करेंगे इनपुट टैक्स, फिर वो आपका टैक्स पेबल फॉर द पीरियड नजर आएगा। Now you can adjust this tax with your credit ledger or the cash ledger, which is available on your GST portal. We will be taking you to various aspects of the GST portal also in this curriculum, entire curriculum. So this is the basic thing. Now, next basic thing is that GST self-assessed tax process. Self-assessed tax process means the government will not come to check you every time. You just have to do it, everything self-assessed, and scrutiny based and some criteria based assessment would happen, and that would only happen to some specific strata of the society, not to everyone. Okay, there are three wings which are important to understand in GST. One is GST Council, who is to make all the decisions, who is to identify that on various aspects the decisions are required to be taken, and then they recommend this to the government accepts it, and then CBIC implements the decisions taken by the GST Council, and GSTN implements the decisions taken by the CBIC. GSTN is basically Goods and Service Tax Network. It is an online platform which actually does all the related activities like registration, like other activities. I'll be taking you through that also. What does GSTN do? So now who all are liable to pay tax? Supplier is liable to pay tax. Some specified recipients are liable to pay tax. Specified e-commerce operator also. Like we will be discussing levy. अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे section 9 bracket 5 की, wherein the e-commerce operator also is liable to pay tax on the supplies made by the vendors registered on the e-commerce portal. We will be talking about that also very soon. Then TDS people are liable to pay tax who are specified registered for collection of for deduction of TDS, and some e-commerce operators are only registered for collection of taxes. They are not supposed to pay taxes on the outward supply. Like for example, let me give you an example. If you are a restaurant owner and you are registered with Zomato, now in this case, you cannot, as a vendor, I am registered with the Zomato, I don't have to charge tax over my supplies made by me of food from Zomato, but rather Zomato will be collecting the taxes on my supplies and would be depositing to the government, and no input tax credit would be allowed to Zomato. Of course, we'll be discussing in this in further detail. Just an example. So GST Council, as I already discussed with you, this is okay. Now GST network, what all functions GST network does. These are the three portals which are principally managed by GST network. Like this is the GST portal. You can click on the link available and you can go to the GST portal. This is the e-invoice portal, which is basically there to generate electronic invoices mandatory for the people who are having aggregate turnover exceeding 10 crore. This is e-way bill. E-way bill is mandatory for every transaction which is happening of goods. If the turnover is above, or I would not say turnover, but the transaction value of goods is
above 50,000 interstate and then respective states. We will give you e-way bill वाला जो पूरा एक chart दे देंगे आपको, that in all those 28 states, what is the limit for generation of e-way bill? कि अगर 50,000 से ज्यादा गुड्स जाएंगे या 1 लाख से ज्यादा गुड्स जाएंगे तो वो सारी आपको एक चार्ट बनाकर दे देंगे. Then it does registration, refund, cancellation, return filing, payment is done, issuance and reply of notices, statement filing, GSTIN, status and return filing you can check, e-way bill generation, cancellation of e-way bill, e-invoice generation, cancellation and report viewing. All these functions are done by GSTN. Now, this is the basic. Now, voice is clear, friends. अभी फिलहाल कोई problem तो नहीं आ रही ना? हाँ जी. अभी कोई problem तो नहीं है, friends? You can write in the chat box. Thank you very much. Thank you. Thanks to Lord Krishna, that things are not going haywire. The purpose is to have maximum out of this short duration. Wonderful. Now stop sending the messages. Thank you. Now, friends, in order to understand the law, every law has definitions. Every law defines the terms used by the law. Of course, we are not going to read the definitions here कि कौन-कौन सी terms को define किया गया कानून में. Do not worry about that. But rather, we will be understanding that how to read the definitions, how to refer them, how to understand the meaning of the definition. So you be with me. Law provides for the definitions of various words to be used in the law. If any definition is not provided, now if law provides definition, then you have to read it accordingly. If the law does not provide it, then what do? You go for dictionary meaning. You go for meaning provided in the General Clauses Act. You go for definition given in any particular case law which is relevant to the issue provided by the court. So, if the definition of the term, listen to me very carefully, if the definition of the term आवाज आ रही है? जय बजरंगबली. So, okay, चलिए. So, if the definition is not provided in the law, then you have to go to the dictionary meaning. If it is not there in the dictionary, then you have to go for the General Clauses Act. Even if it is not there in General Clauses Act, then you can refer to any judgment of the court which provides the definition of the term which you are about to use in the law. सर, आपके वीडियो ऑफ करने से इंटरनेट यूसेज यहाँ खत्म नहीं होगा सर. जो वीडियो यूज कर रहा है अर्पित जी, वो अपना इंटरनेट यूज कर रहा है, मेरा इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है सर. So don't worry about that. Okay. अब ठीक है, आवाज ठीक है अब. चलिए. Now, this is very important, very interesting part. Section 287 defines prescribed. The word prescribed as means prescribed by rules under this act. So whenever in the law something is written that it shall be prescribed,
So it shall be prescribed under rules. Now you have to see that whether it is there in the rules or not. Now, section 2. Both sections start with the phrase unless the context otherwise requires. So listen to me very carefully now. Now, before reading every definition, this phrase to be added automatically, unless the context otherwise requires. For example, if a particular definition is given in a particular manner in the law, but the situation in which you are using it, it requires some other meaning to be assigned to that particular definition or particular situation, then you can do so. अगर आपको कोई और मीनिंग अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी वर्ड के साथ लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं। डेफिनेशंस में सबसे पहले ये लिखता है, ये डेफिनेशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है जी, ओके। Now this is section 1 of the act. This act may be called the Central Goods and Service Tax Act. हम सारे जितने भी प्रोविजन पढ़ेंगे वो CGST Act 2017 and CGST Rules 2017 के पढ़ेंगे, unless the context otherwise requires, और वो मैं मेंशन करूंगा। एक सेकंड रुकिए सर। मैं सिस्टम बदल रहा हूं, लेट्स ट्राई सम अदर थिंग। चलिए तब तक आप थोड़ा सा बियर कीजिए मेरे साथ, आई एम सॉरी। सो whatever sections we would be quoting, that would be CGST, and whatever rules we would be quoting, that would be CGST rules. Now it extends to the whole of India. It shall come into force on such date as the central government. Now it is already decided. It is 1st July for the case of, but in the state of Jammu and Kashmir, now the state Jammu and Kashmir has not been the state anymore, but for record purposes, in the state of Jammu and Kashmir, the law has been incorporated. The law has been made effective from 8th July instead of 1st July 2000. Right? So now we have total 200 forms. There are 22 types of forms. These are the types of forms like composition wale form, ITC wale form, practice wale form, payment wale form, audit wale form, appeal wale, transitional form, inspection wale form, e-way bill wale form. These all are the forms. The basic primary overview. Okay. So now there are some legal maxims which are used in the common parlances. Just for references, I'm going to give you these legal maxims. Like ab initio, it is from the beginning. Ad hoc means for the particular end or case at hand. Audi altum partum, no man shall be condemned unheard.
means the opportunity of being heard. Bona fide is good faith. Casus omissus, apparent omission in law cannot be made good or rectified by the courts. So when there is a problem in the law, it cannot be made good by the courts. It has to be read like that. Certiorari. Certiorari, a writ by which orders passed by inferior court is quashed. Like a tribunal has passed an order and a writ of certiorari is given by the High Court, the order passed by the tribunal can be quashed by the High Court. I'm not going in much detail. De facto is actual, de jure is by law. If there is a de facto, what is the actual position? And de jure, what is the legal position? De novo, to make something anew. Dictum, statement of law made by the judge in the course of decision. If a particular statement is pronounced by the honorable court in a particular judgment, that is called dictum. For example, in case of refund, आवाज तो ठीक आ रही है, चला के रखो, अगर दूसरा अगर जरूरत लगेगी. ये क्या होगा? होस्ट हैज डिसेबल. अच्छा उधर, अच्छा डिसेबल कर दिया उन्होंने. I have changed my system now. मैंने पीपीटी खोल दिया. नॉलेज बॉक्स पड़ा है. So screen is visible, friends. Screen is visible now. आवाज भी ठीक है. चलिए. बहुत बढ़िया. Thank you very much. हाँ रिकॉर्डिंग तू देखना, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं. चलिए. Hopefully now things would be fine. Okay. Now I think it is visible. Right. Okay. So these are some of the other legal maxims. Adjustum generis also a very important maxim, wherein the law says that अगर जब हम कानून को पढ़ते हैं adjustum generis यूज करते हैं तो जब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल a particular same kind of words we are using. वहां नहीं चल रहा, लाइव तो आ रहा है, यहाँ पर लाइव आ रहा है.